জয় বিলুৱে কপাইছে বিহাৰৰ ৰাজনীতি। নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোটৰ বিনিময়ত নাচিবলৈ ক'লে মঞ্চত নাচিব। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যমুনাত নহয় ছুইমিং পুলতহে ডুব মাৰিছিল। নীতিশ কুমাৰ হ'ল অসহায় মুখ্যমন্ত্ৰী। তেওঁৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল বিজেপিৰ হাতত। আপোনাৰ ফোনটোৰ পিছফালে কি লিখা আছে? মেড ইন চাইনা। আমি কওঁ ই মেড ইন বিহাৰ হ'ব লাগে। বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু তেজস্বী যাদৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ ওপৰত এইদৰে তীব্ৰ আক্ৰমণ চলায়। সমাগত বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 2025ৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰণসিঙা বাজিছে। সকলো ৰাজনৈতিক দলসমূহে এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মহাযুদ্ধত আৰজেডি নেতা তেজস্বী যাদৱক সংগ দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এনডিএৰ নীতিশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে। মুজাফৰপুৰৰ পৰাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক কঠোৰ সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ। তেওঁ কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থতহে ছট পূজা আৰু যমুনা নদীক ব্যৱহাৰ কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা ছুইমিং পুলত ডুব মাৰি যমুনাত ডুব মৰা বুলি নাটক কৰিছে। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয়, যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীক আপোনাৰ ভোটৰ বিনিময়ত নাচিবলৈ কয় তেন্তে তেওঁ মঞ্চত নাচি দিব। ভোটৰ স্বাৰ্থত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। ইয়াৰ লগতে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰকো ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। তেওঁ কয়, বিগত 20 বছৰ ধৰি বিহাৰৰ শাসনত থাকি নীতিশ কুমাৰে বিহাৰৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে একো কামেই নকৰিলে। তেওঁৰ মুখখন কেৱল নিৰ্বাচনৰ সময়তহে ব্যৱহাৰ কৰে বিজেপিয়ে। তেওঁৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল বিজেপিৰ হাতত থাকে। কিন্তু আমি বিহাৰৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণী, প্ৰতিটো জাতি, প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোকৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম। আমি কাকো এৰি নাযাওঁ। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। ইয়াৰ লগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে বিভিন্ন সামগ্ৰী ভাৰতত মেড ইন চাইনা হ'ব নালাগে, মেড ইন বিহাৰ হ'ব লাগে। মোবাইল, চাৰ্ট পেন সকলো বিহাৰত বনোৱা উচিত, যাতে বিহাৰৰ যুৱক যুৱতীসকলে সংস্থাপন লাভ কৰে। हम चाहते हैं कि बिहार का युवा, जैसे आपने देखा होगा आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया, नोटबंदी और जीएसटी लागू करके।
जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আৰজেডি নেতা তেজস্বী যাদৱেও বিহাৰৰ নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰক ভাষণযোগে তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনত তেওঁৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে বিহাৰৰ জনতাৰ বাবে কি কৰিব সেই বিষয়েও অৱগত কৰে। তেওঁ নীতিশ চৰকাৰক কটাক্ষ কৰি কয় যে ২০ বছৰ ধৰি বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে নীতিশ কুমাৰে, কিন্তু বিহাৰৰ বাবে একো হোৱা নাই। মাত্ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথাৰ বাহিৰে একো হোৱা নাই। নৰেন্দ্ৰ মোদী 11 বছৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈ কোনো কাৰখানা পাইছেনে, ভাল হস্পিটেল এখন পাইছেনে, ভাল বিশ্ববিদ্যালয় এখন পাইছেনে, জনতাই চৰকাৰী চাকৰি পাইছেনে? নাই, কেৱল ঘুষখোৰৰ বাহিৰে একোৱেই নাপালে বিহাৰৰ জনতাই। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाए, घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और राशन में रिश्वतखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? बोलता है 5 किलो, देता है 3 किलो। रिश्वत ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो आप देखिएगा हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, दाखिल खारिज कराइए, जमीन का रजिस्ट्री कराइए, उसमें घूसखोरी, जातीय प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें घूसखोरी। ইয়াৰ লগতে তেওঁ নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰা, দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰা, মুদ্ৰাস্ফীতি নাইকিয়া কৰা, বিহাৰৰ পৰা প্ৰব্ৰজন শেষ কৰি বিহাৰক অপৰাধমুক্ত আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত কৰি বিহাৰক ১ নম্বৰ কৰি তুলিব বিচৰাৰ কথাও কয় তেজস্বী যাদৱে। তেজস্বীৰ মতে NDAৰ নিজা একো নাই, তেওঁলোকে কেৱল আনক অনুকৰণ কৰিব জানে। আৰু মহিলাসকলৰ একাউণ্টত দিয়া 10,000 টকাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেজস্বী যাদৱে কয়, আমি মাই বেহেনমান যোজনা আনিম, বছৰি 30,000 টকা দিম, পোনে পোনে মাতৃভগ্নীৰ একাউণ্টত সোমাব। ইয়াৰ পৰিমাণ হ'ব 5 বছৰৰ বাবে 1.5 লাখ টকা, যিটো এক আৰ্থিকভাৱে ন্যায় হ'ব। तेजस्वी बेरोजगारी को हटाना चाहता है, गरीबी को हटाना चाहता है, महंगाई को खत्म करना चाहता है, बिहार से पलायन को खत्म करना चाहता है और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता है, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहता है। लेकिन 20 साल नीतीश जी के राज करने के बाद भी, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के राज करने के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन सबसे ज्यादा है। हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे, 30,000 रुपया साल का माताएं बहनों के खाते में डायरेक्ट जाएगा, 5 साल का 1.5 लाख। ये मदद होगा, आर्थिक न्याय होगा, माताएं बहनों को महंगाई से लड़ने के लिए सहयोग होगा, यानी महीना का 2,500। और यही देख करके ये सरकार 10,000 का रिश्वत दे रही है, ये वसूलेगा, ये सरकार वसूलेगा। 20 साल से याद नहीं आ रहा था इनको। और ये उधार है, उधार, ब्याज लगेगा, फिर वापस लेगा। लेकिन हम लोग आएंगे तो आपसे वापस नहीं लेंगे, आपको सहयोग करेंगे। এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে বিহাৰৰ ৰাইজে তেজস্বী যাদৱ আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ এইসমূহ কথাই অন্তৰ গলাব পাৰিবনে বিহাৰৰ জনতাক? কাক বিশ্বাস কৰিব বিহাৰৰ জনতাই? সেয়া 14 নৱেম্বৰত লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।